श्रीदुर्गादेव्यै नमः। अथ एकादशोऽध्यायः। अस्य ध्यानम्। ॐ ब्लर्विद्युतिबिन्दुकिरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रयुक्तां स्मेरमुखीवरदाङ्गपूषा भीतिकरां प्रभजे भुवनेश्वरी। ॐ ऋष्युर्वाच देव्याः ते तत्र महासुरेन्द्रे श्रेन्द्रासुरो पुरुगमास्ता कात्यायनी तुरुष्टो विरुष्टलाभदा विकासित्राब्जासि विकासितासि। देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातो जगतखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महेश्वरूपेण यतः स्थितासि आपं स्वरूपया स्थितयते दापत्याकृतसंलग्नवीर्ये त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमं सीमाया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वे प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः विद्या समस्तस्व देवा भेदा स्त्रियः समस्तस्वताः सकला जगतस्तु त्वयैकता पूरितं वैतत् का ते स्तुति स्वपरापरोक्तिं सर्वभूत यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुतैका वा भवन्तु पर्युक्तः सर्वस्वबुद्धिरूपेण जयनस्य हृदयसंस्थिते स्वर्गपवर्गदेवी नारायणी नमस्तुते कलाकाष्ठीदिरूपेण परिणामं प्रदायिनी विश्वोपरिशक्ते नारायणी नमस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमस्तुते शरणागतदीनार्थ परित्राणां परायणे सर्वस्यातिहरे देवी नारायणी नमस्तुते हंसयुक्तविमानस्थे ब्रह्मरूपेण धारिणी कौशाम्भः क्षारिके देवी नारायणी नमस्तुते त्रिशूलचन्द्रादिधरे महावृषभवाहिनी महेश्वरस्वरूपेण नारायणी नमस्तुते मयूरकुटवृते महाशक्तिधरे नधे कौमारीरूपसंस्थाने नारायणी नमस्तुते शङ्खचक्रगदाशार्ग गृहीते परमायुधे प्रसीद वैष्णवीस्वरूपेण नारायणी नमस्तुते गृहीतोग्रे महाचक्रे दंष्टोधिवसुन्धरे वराहरूपिणि शिवे नारायणी नमस्तुते नृसिंहरूपे गृह्ण हन्तु दैत्यो कृतोधमे त्रिलोक्यत्राणसहिते नारायणी नमस्तुते किरीटिनी महावज्रे सहस्रो नैनोज्ज्वले वृत्तप्राहणे चन्द्रे नारायणी नमस्तुते शिवदूते स्वरूपेण अतिदैत्या महाबले घोररूपे महारावे नारायणी नमस्तुते द्रंष्टकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डमुण्डमथने नारायणी नमस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्राद्धे पृष्ठे स्वधे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमस्तुते मेधे सरस्वती वरे भुवेति ब्राह्मवै तामसी नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ते समन्विते वैवैस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते एतत् ते वदनं सौम्यं लोचनं त्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनी नमस्तुते ज्वालाकराल मृत्युज्ञासेरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतिभ्यः भद्रकाली नमस्तुते हीनस्तिं दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्य या जगत् सा घण्ट पातु नो देवी पापभ्यं सुतानि व असुरासुरज्ञापङ्कजचरितस्ते करोज्ज्वलं सुभाद खड्गो भवन्ति चण्डिके न त्वं वयम्
रोगाणां शेषां पहन्ति तुष्टा रुष्टां तु कामान् सकलानभीष्टा त्वमं श्रुतानां न विपन्नराणां त्वमं श्रुता हर्षयतां प्रयन्ति एतत् ते कृतनं यत् कन्दनं त्वयेध धर्मद्विषं देवी महासुराणां रूपैर्बहुधार्थिमूर्ते कृताम्बिकेति तत् प्रकरोति कान्या विधासु सहस्रेषु विवेकदीपेषु वाक्येषु च कातुदन्या ममं त्वगर्तेति महान्धकारे बिभ्रामते तदेव विश्वं रक्षांसि यत्रोगस्य विशाश्च नागा यत्रायोदस्यु बलानि यत्र दावानला यत्र तथादिमध्ये तत्र स्थितं त्वं परिपासि विश्वं विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिकां धारयसि विश्वं विश्वेश्वा भवति भवन्ति विशाश्वयते भक्तिनम्रा देवी प्रसीद परिपालनो ओभीति नित्यं यथासुरवधादुदेव शः पापानि सर्वजगतां प्रसन्नं न्यासु उत्पातपाकजनिताश्चं महोपसर्गाणां प्रणतानां प्रसीदं त्वं देवी विश्वातिहरिणीं त्रिलोक्यवासिनमिण्डे लोकानां वरदं भव देव्यौचुः वरदाहं सुरगणं वरं यनमीक्षस कथं त्वं विडिद्वयं प्रयच्छामि जगतमुपकारकं देवा ऊचुः सर्वबाधाप्रसन्मन्नं त्रिलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वकार्य असमदैवैर्विनाशिनी देव्यौचुः वैवस्वन्मन्त्रे प्राप्ते अंष्टाविंशतमे युगे शुम्भो निशुम्भश्च उत्पन्नेते महासुराणाम् नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा तदस्य नास्यामीं बिन्धवाचलनिवासिनीं पुनर्प्राप्तरौद्रेण रूपेण पृथ्वीतले अवर्तहीनस्तिं विप्रचिन्तानस्तु दानवानां भयक्षयन्तश्चं तानुग्रां विप्रचितानां महासुराणां रक्तदन्ता भविष्यन्ति दाढीमे कुसुमोपमां ततो माम देवता स्वर्गे मृतलोके च मानवाः स्तुवन्तयो वाह्यस्यन्ति सततं रक्तदन्तिकां भुवश्च शतवार्षिक्यां मनावृष्टस्त्यां मुनिभिः संस्तुतो भूमौ सम्भविष्याय योनिजा ततः सतेन नेत्राणां निरीक्ष्यास्म्यनुमुनिं कृत्य यस्यन्ति मनुजा मां साति क्षीमिति मा ततः तो अखिलं लोक आत्मदेह समुद्भवे भरिष्यामिं सुरसाक्रवृष्टे प्राणधारके शाकम्भरीति विख्यातिं तदा यास्यां भुवि तत्रैव च वधिष्यामिं दुर्गमाख्यां महासुरं दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमां रूपं कृत्या हिमाचले रक्षांसि भक्ष्यास्मि मुनीनां त्राणकारक तदा मां मुनयं सर्वे स्तुतोऽस्यन्त्यायनं मूर्तये भीमां देवी विख्यातं तन्मे नामं भविष्यति यदा रूपं त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यामि तदाहं भ्रामरं रूपे कृत्या असखे सङ्ख्ये षट्पदं त्रिलोक्यस्य हितार्थवध्यस्यामि महासुरं भ्रामरीति च मालोकास्तास्त्युदुं सर्वतः इदं यदा बाधा तथा भविष्यति तदा ते वीर्यां करिष्यामि संरक्षयम् ओम श्रीमार्कण्डेय पुराणे सार्वणिमन्वन्तरे देवी महात्म्यं दिव्यस्तुति नाममेकादशोऽध्यायः। बोलिए दुर्गा महारानी की जय, माता राजराजेश्वरी महारानी की जय, माता विंध्यवासिनी महारानी की जय। मैया तेरी सदा जय हो, जय हो, जय हो मैया।